So good afternoon all. We will wait for 2 minutes so all will be joined. Still most of the students are not joined. So we have started with functions and we have almost covered all the functions regarding string that have in syllabus. Only 3 functions are remaining that we will cover in this lecture. So first we will revise all the things regarding today's lecture. We have started with the first function, that is split function, to split the given string. Then opposite to of that specific split function, we have covered that join function. Then another function is identifier, to check whether that string is valid identifier or not. If that is a valid identifier, then it will return true, else it will return false. To return a list of index with that character of that specific string with respect to index. So for that function, for that we have used enumerate function. Okay. Then zfill to return a string with left padded with that specific zeros to the total width of that character. For that we use zfill function. Then count function to check whether specific substring, how many times that will be occur in that specific given string. So for that purpose, we have used count function. Then ends with, to check whether that given specific string is ended with that specific substring or not. So for that purpose, we are using ends with function. Vice versa starts with. That is, if that specific string is start with that specific substring or not. Then find function and rfind function to check to return the index of that specific string that we are searching in that specific given string. So for that purpose is find is used. If that string is find, it will return, it will give the index, else it will give you -1. Similarly, index is there, but in index for if string is not found, it will give you error or specific error, that is substring not found. Then rfind, it is same as that of find. Index and rfind are same as that of a find and index. Only one difference, your string will be substring will be searched from end of your string, given string. Okay. Then left justified, right justified, and center justified. Okay. So these are the things that we have covered in previous lecture. Okay. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So we'll move forward with respect to strip function, L strip, R strip, and normal strip function. Okay. So I will take one string, one is equal to and then string bracket s1 dot L strip. So what will happen here as per our output? I will print first, print in bracket s1. So you'll get the output like this. Okay, what is the output you are getting here? Hello? What is the output you are getting here? In first line, what I have done here, I have written one string, and that is string is with respect to space at the starting of that specific string. Some space is given, and then I have written one string. Okay, and I have that printed that string. You'll get the output like this: space and hello. But you want to remove that leading space, leading white space in the string. For that purpose, what you have to use? L strip. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. To remove leading white space in a string, we use L strip.
Okay, am I clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, we will move with another. That is जैसे L strip होता है वैसे ही क्या करेंगे, R strip का देखेंगे. S2 is equal to, इसमें कैसे, इसमें हमें डायरेक्टली यहाँ पे पता नहीं चलेगा, बिकॉज राइट में जो भी स्पेस होता है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली यहाँ पे पता नहीं चलेगा, बट स्टिल वी विल यूज दिस S2 डॉट R स्ट्रिप. वो रिमूव होता है पर वहां पे. ओके, आई विल रन दिस str. ओके, R strip. ओके, spelling is wrong. अभी यहाँ पे प्रिंट जब करेंगे, प्रिंट S2, what will happen? समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? सर मग R strip आणि नॉर्मल S2 प्रिंट मध्ये फरकच नाही उरत ना. हा, तेच सांगतो मी तुला की त्याच्यामध्ये ते दिले की सांगतो स्पेस आपल्याला ते कळत नाही, पण स्पेस रिमूव्ह झालेला आहे. हो ते हा. येस, समजलं का ते? ओके, आता याच्यासारखेच दोन्ही स्पेस आता ऍट अ टाइम तुम्हाला रिमूव्ह करायच्यात, तर त्यासाठी स्ट्रिप आहे, स्ट्रिप फंक्शन दिलंय. So I will write here print in bracket S3 and then print in bracket S3 dot strip. And I will write a comment like this. Okay. See here. Getting? Yes or no? Am I clear? Yes or no? Strip function. स्ट्रिप आणि L स्ट्रिप मध्ये फरक नाहीये. हा, तेच सांगतोय कशामुळे होतं ते, कारण की तो स्पेस आपल्याला दिसत नाही ना रे. कळलं का तुला काय म्हणतो? पुढे स्पेस म्हणजे काय आहे? ब्लँक स्पेस आहे ना तो. तर मी L स्ट्रिप Yes. बोलतोय. हा, तेच बोलतोय मी की स्ट्रिप मध्ये आता इथे हा जो आहे हा स्पेस हा रिमूव्ह झालेला आहे ऍक्च्युअल मध्ये. समजलं का? हा जर याने होणार आहे, आता इथे जर L स्ट्रिप जर यूज केला तरी काय येणार आहे आउटपुट? सेम येणार आहे. येस. काय आलं? एक मिनिट. इथे एस गेला. ओके, समजलं? येस ऑर नो? तो काय आहे, रिमूव्ह होतो तो स्पेस, तो फक्त आता इथे दिसत नाही इन द सेन्स काय तो इनविजिबल आहे. एम आय क्लिअर? ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस in string we use R strip, and to remove both we have to use both leading and trailing white space in a string. We are using strip function. So this is all about the functions which are given in your syllabus regarding string. Any function, any 2 or 3 function can be there in your exam. So it is necessary to learn all the functions by heart. What is the use of that each and every function? And directly question can be asked regarding 2-line code will be given. And you have to write down choose a correct option regarding what is the correct output regarding their specific program. Okay, so these are all the functions which are given in Python regarding string. Am I clear? Yes or no? Yes sir. आता मी नवीन टॉपिक होणार आहे का? Yes. So any doubt regarding this string functions, built-in functions? Okay, so we will move forward. Actually slice हमने देखा था, बट उसमें कुछ वेरिएशंस है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, क्योंकि स्लाइस के ऊपर जनरली 1 या 2 क्वेश्चंस होते ही है. सम 2-line कोड विल बी गिवन and proper indexing will be given in print statement, and you have to find out the correct output for that specific string. So what is slice? So slice is nothing but a substring of a string is called as slice, मतलब specific part of your string.
मतलब if your string consists of 10 characters, उसमें से 2 कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करने, so that 2 characters are nothing but slice. That is nothing, or we can also call it as a substring. So substring of a string is called as slice. So slice operation is used to refer to a sub part of a string or sequence. Okay. So we can take a subset or subpart of a original string by using sub index, start index, colon, end index. And for that, we are using 2 square brackets, which is also known as slicing operator. Here are some of the points that I already discussed in that list of topic, जहाँ पे आपने specific index wise हमने list के element वहाँ पे display किए थे. So likewise here also, omitting the start index and index रखा तो क्या होगा? By default it takes the start index of the string. Omitting the last index, end index, by default takes end index of the string. Likewise, जो आप करके देखने वाले हैं one by one. Python uses negative numbers to access a character at the end of the string, जो आपने already list में भी देखा था. Okay, negative index number count start from -1 from end of the string. Then we can use a stride in slicing string by specifying a third argument in the slice. म्हणजे ते कसं होतं ते सांगतो तुम्हाला मी. I will show you how this operation will be performed. 2:10:3. Okay, so we will see directly one example. See, so I have written one string here. Name is equal to FE division G. Okay, and I have represented that string in the form of indexing. So all of you getting the picture of that clear picture of that FE division G with respect to indexing. Am I clear? समझ में आ रहा है सबको? जो निगेटिव्ह इंडेक्स असतो तो शेवटच्या -1 पासून चालू करतात का? येस येस येस. लिस्ट मध्ये जे केलं तेच. लिस्ट टॉपिक में हमने देखा था ना नेगेटिव इंडेक्सिंग. Yes or no? Am I? हो सर. Yes. So same likewise here also string will be stored like this. जैसे कि 0 index is nothing but for example f is stored, e will be stored on first index, dash will be stored on second index, d will be stored on third index. This is a representation of string with respect to memory. Am I clear? Am I clear? Yes or no? Yes sir. Others? Yes sir. Okay. So what is the first statement I have written here? Normal statement जो हम normally कर रहे हैं. Print name. So print name मतलब क्या हो गया? It will start from, it will display all the complete string. It will print all the string, the contents of that all the string, that is the characters which are there in that specific string. जैसे कि name मतलब वो पूरा string वहाँ पे display होगा. That is answer is what? FE dash division dash G. Okay. Then second one that I have written one statement. Print in bracket name 1:5. So what is the meaning of this? Your index will be start from first and goes up to 4. 5 will be excluded index. Okay, am I clear? Am I clear? Yes or no? Yes sir. Yes. So आपका first index क्या हो गया? E. So your output will be what is output? It will print. Actually यहाँ पे गलत लिखा है ना? नहीं, बराबर है. No. 1 से start मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? E dash D and I. Am I clear? Am I clear? Yes, Yes, or no? Okay. So we'll actually do this lyrically. One program we will do this for this. So you'll get the clear idea about that. I will take one string S1 equal to in bracket, for example, Python ही लेते हैं उसमें. Python. Okay. And I will do first operation, जो normal operation है, print S1, then print in bracket specific index कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो I will do for example 1:3. Okay, and then print starting index नहीं देंगे हम यहाँ पे अभी, S in bracket colon for example 5. Okay. And then print bracket S1. यहाँ पे हम क्या करेंगे? Last index नहीं देंगे. So this is another one. Then next thing I will do, print bracket S1 colon, only colon. I am not mentioning any start index or end index. Then next thing I will do, for example, okay.
in bracket s1 in bracket 1 colon 10. And okay, so we will run this first. So first tell me, I will write the answer. Tell me the answer here. Fast, आपको ही बताना है अभी. बोला पटकन, fast. What is the answer? First line. Output. Python. Yes, Python. And I want answer from others also. Next. Fast. Y and T. Y, T, yes. Y. Yes. Okay, first. Next. Fast. Clear है, बराबर है? Whether this is correct? Third one, third print statement. YTHON, no? YTHON. N एनर करना एनर. ठीक है. Next. Fast. Y THON ना? Clear ना? Okay. And now next, last one, last नहीं, second last. Python. Full characters. Yes, Python. Yes. And here? Python. Python का error. I will write here comment, slice operation. मला सांगा, what is the last index of your string? 0, 1, 2, 3, 4, 5 na? Am I clear? 5 na? And what I am mentioning here? 10. So it gives you error na? Actually what? 1 colon 10 लिखा था ना? S1. Four, 5, 6. Oh, wait. Index यहाँ पे Python लिखा था. Okay. S1 in bracket. 1 से start हुआ है यहाँ पे. But I will check. यहाँ पे actually error आना चाहिए because out of index यहाँ पे जा रहा है वो. So why it is not giving error? THON 1 से स्टार्ट किया उसने, एंड होना नहीं चाहिए एक्चुअली. वहां पे आउट ऑफ रेंज आना चाहिए. वहां पे इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. मला पण एरर नाही आलं. yes no actually what happen, this will happen with respect, जब इटरेट करते हैं ना तब वो यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने एंड इंडेक्स लिखा है तो वहां पे स्कैन करते जाएगा वो. so you'll get the output for this, but when you are tracing regarding what specific operation doing in that specific जो हमने प्रीवियसली एक 2 लेक्चर्स बिफोर एक प्रोग्राम किया था, देखो याद है कि पता नहीं मुझे. इन दैट केस आउट ऑफ रेंज का एक आपको एरर आया था. एम आई ऑडिबल? आया था एरर ना? हाँ. सो इन दैट केस यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है. सो उसका लास्ट इंडेक्स तो विद इन अ रेंज है तो ऑब्वियसली वो आने वाला है वहां पे. सो गेट द आउटपुट दिस, दैट इज वाई से स्टार्ट हुआ एंड THON लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है 5 है तो वो 5 के रेंज में है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द आउटपुट. यहाँ पे 0 किया तो यू विल गेट द आउटपुट आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम Python P. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस स्लाइसिंग? तर मला एकदा सांगा ना तिथं आउट ऑफ रेंज, तिथं का नाही आलं आउट ऑफ रेंजचं? कारण की इथे काय झालं, आपण रेंज दिली आणि प्रिंट करतोय ना तर बाकीचे सगळे एलिमेंट त्याला भेटले ना, त्यामुळे आउट ऑफ रेंजचा विषयच नाहीये. स्पेसिफिक रेंज पार्ट टाकली ना आपण इथे. जेव्हा टाकत नाही तो लास्टला बाय डिफॉल्ट काय कन्सिडर करतो,
लास्ट एलिमेंट कन्सिडर करतो त्याला इग्नोर करून टाकतो. लास्ट हा, तर इथे पण तू काय केलंय, मी एक स्पेसिफिक नंबर टाकलाय तो तुझ्या रेंज पेक्षा म्हणजे स्ट्रिंगच्या लेंथ पेक्षा जास्त आहे, तर त्या केसमध्ये तो घेणारच आहे, म्हणजे त्याला तो एलिमेंट भेटतोच आहे. आलं का लक्षात? एम आय क्लिअर? सर येस, त्यामुळे तिथे तो भेटणार आहे. पण स्पेसिफिकली काही ऑपरेशन असतात ना, त्या केसमध्ये तो आउट ऑफ रेंजचा एरर देतो. आता ते मला आठवत नाही कधी, 2 लेक्चर पूर्वी मी तो एक करून दाखवलं होतं, त्यात तो एरर आला होता आपल्याला. एक्झॅक्टली आठवत नाहीये, फर्स्ट लेक्चरलाच आय थिंक आपण करून पाहिलं होतं ते. ह्या केसमध्ये आपण स्पेसिफिक स्लाइड म्हणजे स्पेसिफिक स्ट्रिंग आपण डिस्प्ले करतोय बाय युजिंग इंडेक्सिंग. तर तुम्ही इथे टाकलं नाही तर तो बाय डिफॉल्ट काय करतोय, एंड एलिमेंट कन्सिडर करतो आणि पूर्ण स्ट्रिंग तिथे डिस्प्ले करतो. आणि मोर दॅन आउट ऑफ रेंज जरी गेला तर तो काय कन्सिडर करणार तिथे, इट विल डिस्प्ले दॅट स्पेसिफिक कॅरेक्टर दॅट विल बी अवेलेबल इन दॅट स्पेसिफिक रेंज. म्हणजे 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर्यंत आहेच आहे. तुम्ही रेंज काय दिली 7, त्यामुळे तो कन्सिडर करणारच आहे. एम आय क्लिअर? येस ऑर नो? येस सर. ओके. आता याच्यामध्येच नाही का एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो आहे तो ऍक्च्युअली सिलेबसमध्ये विचारला जात नाही, पण तो लक्षात ठेवा तुम्ही, की हा वाला जो इथे मी सांगतोय 1:13:11:3. आता इथे बघा आउटपुट काय सांगितलं इथे, व्हॉट इज आउटपुट आय रिटर्न हियर, EISN. सो इथे काय होतं बघा, इट स्किप म्हणजे जसं की नॉर्मली 2:10 जेव्हा करता तो बाय डिफॉल्ट स्ट्राईड जो असतो, स्ट्राईड इन द सेन्स नेक्स्ट कॅरेक्टर लगेच तो. आता इथे काय होतो 2:10:2 जेव्हा करणार तो काय करतो, स्किप करतो मधले काही कॅरेक्टर्स. तर कसे स्किप करतो ते सांगतो. आय विल run this code and I will write one command S1 bracket for example 1:, आणि इथे आता समजा 6 देतो एक इंडेक्स आणि इथे 2. आता इथे स्ट्राईड मी 2 ठेवलाय. नॉर्मली बाय डिफॉल्ट स्ट्राईड हा 1 असतो. 1 म्हणजे कसं, 1 आफ्टर अनदर तो डिस्प्ले होतो. म्हणजे 1:3 म्हणजे काय, 1 नंतर 1 इंडेक्सला y नंतर लगेच t. आता इथे काय होणार बघा, टेल मी द व्हॉट विल हॅपन. See, what is the answer that we are getting here? Y, H and N na? What we are getting? Hash Y, H and N. तो बघा आता स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किया था हमने, ऑब्वियसली 1 है, एंड इंडेक्स हमने 6 रखा था और जो स्ट्राइड था मैंने 2 रखा था. मतलब है देखो 1 के बाद 2 एक स्किप होगा, 1 2 स्किप होने के बाद क्या आया हमारा H आया, H के बाद H और O स्किप होगा, N आया. गेटिंग? एम आई क्लियर? सो उतना क्या करेगा, उतने दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी स्किप यूजिंग दैट स्पेसिफिक स्ट्राइड. और बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्राइड होता है व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग दैट, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड होता है 1, वहां पे एक भी कैरेक्टर स्किप नहीं होता. अभी यहाँ पे देखो व्हेन आई एम डूइंग राइटिंग हियर, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा और कुछ बड़ा स्ट्राइड लिखा. बड़ा स्ट्राइड मीन्स आई विल राइट हियर 3. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. क्या आंसर होगा स्ट्राइड 3 रखने से? y के बाद क्या डिस्प्ले होगा? Y O स्पेस W ऐसे. YO देन स्पेस के बाद स्पेस. स्पेस अभी यहाँ पे मैंने 2 दिए, क्या एक मिनट हाँ 2 दिए हो गए. हाँ यस, एक स्पेस देता हूं मैं. ओके, y के बाद O के बाद N और W, मतलब W आएगा ना? W and L. सर W एंड L. यस, फिर L के बाद है क्या, कुछ नहीं है. ओके, YO आया. वेट टाकलं ना मध्ये. येस 6 टाकले, ते आपल्याला काय करायला लागेल, वाढवायला लागेल रेंज. फॉर एक्झाम्पल आता किती, 10 11 12 करू. ठीक आहे, ते इंडेक्स नंबर 6 पर्यंत चालणार ना. yes. Getting the answer, YOWL. Am I clear? Yes or no? All of you getting this stride factor? अरे विचारतोय मी तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? कसं आलं आन्सर, समजलं का तुम्हाला? दॅट नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स विल बी स्किप. म्हणजे बघा आता 1 पासून स्टार्ट केला, 1 ला होता आपला Y डिस्प्ले झाला. Y नंतर थर्ड कॅरेक्टर कोणता आहे, THO. ओके, सो O विल बी डिस्प्ले. O नंतर थर्ड कॅरेक्टर कोणतं आहे, 1 स्पेस अँड W. सो W विल बी डिस्प्ले. आफ्टर W व्हॉट इज द थर्ड कॅरेक्टर, ORL. सो L विल बी डिस्प्ले. नाउ टेल मी द आन्सर.
This is called as stride factor. I will write a comment here. This is stride factor. Which is used in between character of string. नॉर्मली हमने देखा कि नॉर्मली हम इस रेंज से उस रेंज तक जा सकते हैं, पर स्पेसिफिकली कुछ बीच के भी कैरेक्टर को स्किप करना है, तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज स्ट्राइड फैक्टर. और यहाँ पे याद रखना आपको, हियर स्ट्राइड फैक्टर is always what? Tell me first. Is always 1. मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या हो रहा है, P के बाद Y आएगा, Y के बाद T आएगा, T के बाद H आ रहा है, और यहाँ पे हमने जब 4 किया. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस. 4 का आंसर बताओ. 1:12:4. टेल मी द आंसर. Y N और R. Y N. yes. R भी आएगा आंसर. R भी आएगा. yes. वेट. Y के बाद 1 2 3 4. yes. 1 2 3 4. yes. Y R भी are also there. yes. Am I clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So I will change this now. Now tell me. This is very important with respect to exam point of view. Slice operation. Y और R ही है. Y R. Y R. Getting? Am I clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. So this is all about the what? Slice operation with respect to string. I think anybody don't have any doubt regarding this slice operation. ये तो normal है, simple है, but यहाँ पे ये चीजें, ये 2 important है जहाँ पे आपको चीजें याद रखनी है. एंड नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट एंड क्या करेगा, वो लास्ट इंडेक्स कंसीडर करता है, मतलब पूरा स्ट्रिंग वहां पे डिस्प्ले होगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स वो क्या करेगा, 0 कंसीडर करेगा. एम आई क्लियर? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, and sir. if you are not mentioning any index, that is starting index as well, index total string will be displayed. मतलब this first line and this 5th line both are equal, both giving the same answer. And एक stride वाला तो आपको मैंने अभी बताया कि what will happen with respect to stride. So I think you don't have any doubt regarding this topic, slice operation. Okay, so slice is nothing but what? It is a substring of given string. Okay. That can be displayed by square brackets and colon, and starting index and ending index. Am I clear? बोला पटकन फास्ट. एम आय क्लिअर? Yes, sir. ओके. बाकीचे काय कल्याणी झालं, बाकीच्यांना समजलं नाही वाटतं, मला वाटतं कोणालाच समजलंय सर. ओके ठीक आहे. ओके. सो लक्षात ठेवा, स्लाइस वरती डेफिनेटली एक तरी क्वेश्चन तुम्हाला असणार आहे. तर बघा क्वेश्चन कसे झाले सांगतो. स्लाइस वरती एक क्वेश्चन, देन कॉन्कॅटिनेशन, अपेंडिंग अँड मल्टिप्लाइंग त्याच्यावरती एक क्वेश्चन, 2 सेकंड क्वेश्चन तो झाला. स्ट्रिंगचा बेसिक थेअरी वरती एखादा क्वेश्चन असतं. 3rd क्वेश्चन फंक्शनचे दिले 3 किंवा 4 फंक्शन वरती 3 क्वेश्चन मिनिमम. फंक्शनचे वरती क्वेश्चन म्हणजे टोटल 6 क्वेश्चन हे झाले. आणि देन स्लाइस वरती एक 7वा क्वेश्चन. ओके. आता नेक्स्ट टॉपिक आपण त्यातला पाहू, ओआरडी आणि सीएचआर. तो ऍक्च्युअली मी घेतला एकदा ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला, इथे डिस्कस करू फक्त. सीआर ORD and CHR function with respect to string. So ORD function returns ASCII code of the character. इथे मी तुम्हाला ASCII कोड पण इथे मेन्शन करून दिलेले आहेत, तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा. पण जनरली एक्झाम मध्ये सिंपल क्वेश्चन विचारला तो ASCII कोडचा, म्हणजे जनरल ABCD त्याला इक्वल्स कॅरेक्टर विल बी गिवन अँड यू हॅव टू रिमेंबर फर्स्ट कॅरेक्टर ओनली. A ची व्हॅल्यू 65 अँड स्मॉल a ची व्हॅल्यू 97 आणि 0 ची व्हॅल्यू 48 अँड 9 ची व्हॅल्यू 57.
नंबरचं बोलतो मी. एम आय क्लिअर? येस ऑर नो? येस. नेक्स्ट वन CHR फंक्शन. हा बोला. मोठ्या याची व्हॅल्यू 65 आणि स्मॉल याची 97. येस येस येस. स्मॉल एची 97. दिस इज फिक्स व्हॅल्यू. आता ते रन करून तुम्हाला दाखवले तरी एकदा पाहू एक कोड परत एकदा. आता ORD फंक्शन काय करतो? फॉर एक्झाम्पल कॅरेक्टर पास केलं तुम्ही ORD फंक्शनला, इट विल गिव्ह यू द ASCII व्हॅल्यू ऑफ दॅट कॅरेक्टर. आणि त्याच्या व्हाईस वर्सा काय करतो CHR फंक्शन. म्हणजे इफ यू आर पासिंग द what that ASCII value, you will get the character for that specific value. Okay, so we will run one code. Actually करके देखा है हमने, पर फिर भी we will see one example. एक्झाम मध्ये याच्यावरती मला तर वाटतं म्हणजे लास्ट दोन वेळा एक्झाम झाली आहे ऑनलाईन. तर दोन्ही एक्झाम मध्ये नेस्टेड CHR आणि ORD वाला फंक्शन क्वेश्चन विचारला होता, जिथे डबल फंक्शन यूज केले होते. So here I will write comment ORD and CHR. Okay. ORD and CHR function. I will write one CH is equal to, for example, B. I will write C, and then in bracket ORD in bracket CH. So what is the output I will get here? Small CA. What the output? Fast. What is the output that I will get? Fast. Small CA. After ORD, applying the ORD function on CH, what will we get? 99, na? 99, yes. Yes, okay. Getting? Am I clear? Yes, sir. Yes, I will directly write now. Print in bracket, CHR in bracket. What you have to mention here now? क्या mention करना पड़ेगा हमें? Number कोई भी. Number, yes. So I will write 98. So what is the output that I will get? B, small b. Small b, yes, perfect. Getting? अभी क्या करेंगे, ये अदर देन दिस आई विल राइट 57 आल्सो, जो हमने नंबर देखा था. तो यहाँ पे हमें 9 आना चाहिए. गेटिंग 9. ये याद रखो आप, यहाँ पे लिया देखो 48 इज फॉर 0 एंड 49 फॉर लाइकवाइज 1, लाइकवाइज 9 के लिए 57. ओके. अभी क्या करेंगे, जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं ना यहाँ पे, कहाँ पे, कीबोर्ड पे. अभी ये नॉर्मली ABCD तो हमने देखा, उसके बाद नंबर्स भी देखे. अभी रैंडमली कुछ तो नहीं कि मैं ये वैल्यू डालता हूँ. फॉर एग्जांपल 90 डालता हूँ यहाँ पे, 90 और 92 डालता हूँ. ओके. क्या मिला मुझे? बैकवर्ड स्लैश. एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, हॅलो. sir. हा, तर एक लक्षात ठेवा, ऑल ऑफ यू अंडर क्लियर वन थिंग. जो भी आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज होते, फॉर ईच एंड एवरी की दे हैव असाइन वन ASCII वैल्यू. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू हमें पता होते हैं जनरली, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं. ये नॉर्मली बाकी के जो है कैरेक्टर वाले वो नहीं पूछे जाते, बट आपको रन करने मतलब दिखाने के लिए मैं आपको ये बताया. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट अनदर वैल्यू 123. क्या मिला? क्या मिला? करली ब्रैकेट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. So all of you clear with this? Each and every character having got ASCII value. Okay. Anybody can tell me what is the full form of ASCII? किसी को पता है? American standard something. American Standard Code for Information and Interchange. Am I clear? सर परत सांगा. हॅलो, आवाज येतोय का? हो, परत सांगा. अमेरिकन स्टँडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन अँड इंटरचेंज. समजला? लिहून घेतलं सगळ्यांनी? ऍक्च्युली विचारत नाही क्वेश्चन, बट यू हॅव टू रिमेंबर दिस. ॲब्रिव्हेटेड मतलब द फुल फॉर्म ऑफ दैट ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. क्लियर आहे सबको? एस और नो? हा, तर फक्त एवढ्या व्हॅल्यू लक्ष ठेव, बाकी लक्ष ठेवायची गरज नाही. ओनली दिस वन. याच्यावरतीच क्वेश्चन येतील. सिंपल क्वेश्चन असतो. आता याच्यामध्ये ट्विस्ट क्वेस्ट कसा केला जातो की ते डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारत नाही, तर ते असं विचारतात. सो टेल मी द आन्सर. बोला पटकन रे. खूप असं इरिटेट होतो, काहीच बोलत नाही तुम्ही तिकडून. व्हॉट इज आन्सर? 123. गेटिंग? येस और नो? Am I clear? Yes. So all of you remember these two functions that can be asked, definitely asked. और जनरली अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें ये वाला ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. अभी नेक्स्ट है इन एंड नॉट इन ऑपरेटर. ये ऑलरेडी हमने देखा था. कहां पे देखा था इन एंड नॉट इन ऑपरेटर? लिस्ट के पहले कहां पे देखा था? ऑपरेटर्स में. विच टाइप ऑफ ऑपरेटर वी कॉल इट एज अ? विच टाइप ऑफ ऑपरेटर वी कॉल इट एज अ? इन एंड नॉट इन को कौन से टाइप के ऑपरेटर बोलते हैं हम? कौन से कैटेगरी में आते हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखा था ना हमने. लॉजिकल के. अभी तो आपको मुझे लगता है फटके देने पड़ेंगे. लॉजिकल कहां से आया यहाँ पे? इट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर ना. मेंबरशिप ऑपरेटर. तो अलग टाइप के ऑपरेटर देखे थे. एक देखा था हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड इज नॉट. एंड ये सेकंड वाला था मेंबरशिप, जिसमें कीवर्ड यूज होते हैं जनरली. लॉजिकल ऑपरेटर कौन से देखे थे हमने? एंड, और दोज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, सो मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब अभी यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है वो देखा था. देखते मतलब स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, चेक करना है. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक वन सिंपल एग्जांपल. वन स्ट्रिंग आई विल टेक s1 इक्वल टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, and I will see here what I am doing here. s2 equal to डबल कोट में 2 लिखता हूं. ओके, एंड इफ s2 in s1, what is the meaning of this line? Tell me fast. If and else 2 is in S1. Yes, whether it is present in that specific s1 or not. तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? फाउंड. एंड एल्स में लिखता हूं, एल्स का एक को पार्ट लिखता हूं जहां पे हमें क्या मिलेगा? प्रिंट नॉट फाउंड. So tell me the output. Found. Yes, found. Perfect. Getting? To check whether that specific substring is present in that given string, we have to use in operator. So I will write here comment to check whether given substring is present in given string. So I will do one change now. Now tell me. Not found. Yes. Not found. Yes, perfect. Okay, because that 2 1 is not there. Now I will do one change. See here. Instead of in, I will write not in. Now tell me. Found. अभी फाउंड आएगा मतलब हाँ, पर वहां पे क्या चाहिए? एक्चुअली नॉट फाउंड चाहिए एज पर आवर लॉजिक. बराबर ना?
यहाँ पे क्या चाहिए, नॉट फाउंड, और यहाँ पे क्या चाहिए, सर फाउंड, यस फाउंड. गेटिंग, एम आई क्लियर, Yes, एम sir. आई, यस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द Hello? इन एंड नॉट. हाँ बोला, बोल बोल बोल. सर ते हा. जर आपण तिथं टेस्ट दिलं ना तर येणार ना, प्रेझेंट असणार ना. येस, इथे म्हणतोय ना तू, दिस वन असं म्हणतो फक्त ना, लाईकवाईज. फक्त ते तर हा हा फाउंड येणार ना. Alla found, yes, 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 yes. Because space is also one of the character, जो नॉर्मली लेंथ में भी कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है. ओके, तो अभी नॉट इन तो ऑलरेडी है, इसलिए वो वहां पे फाउंड आया. एम आई क्लियर, यस और नो? अरे Yes, sir. येस येस येस. जरा थोडस येस और नो बोलायला थोडस एवढा वेळ नाही लागला पाहिजे, आणि ऑल हॅव टू इंटरॅक्ट इन दिस सेशन. प्रत्येक वेळेस सांगून मला कंटाळा आला होता त्या गोष्ट, इरिटेट व्हायला लागले. लेक्चर घेऊनच उपयोग काय ना, इफ आर नॉट. आणि काय सगळ्या गोष्टी समोर आहेत. आय एम नॉट आस्किंग यू हॅव टू टेल मी द थिंग दॅट आय हॅव नॉट टीच यू, taught you up till now. I am asking the question regarding what the topic that we have covered today itself or that day before. और सामने होता है, सारी चीजें सामने होती है, सिंपली यू हैव टू ओनली गेस द आउटपुट. कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको पूछता हूं कि वेदर व्हाट इज आउटपुट, and this is not expected from your side and from at least C division. Am I clear? Yes, sir. Okay. So this is all about the ORD function and CHR function, then in and not in operator. So exam में question पूछा जाता है, which of the following operator can be used with respect to that string. So वहां पे in not in वहां पे option होगा, उसके regarding question भी हो सकता है. Likewise this code will be there, 4-line code is there, and what is the correct output of that specific code. So you have to remember this operator to check whether that specific string is substring is present in given string or not. For that purpose you have to use that in and not in. Am I clear? Yes or no? Yes, sir. So we will move forward. Comparing operator, अभी ये भी important है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. इसके यहाँ पे हमें ASCII वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा. ओके, so comparing the string मतलब चेक करना है whether two strings are equal or greater or likewise. Okay, so what I will do first, I will take one string. नहीं, डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखता हूं मैं. I will not take string and then see here what I am writing here. Tell me what will happen. True or false? False. Yes, perfect. This is false. Because ASCII value of small a and capital A are different. Am I clear? Yes or no? आता yes तरी म्हणा किंवा no तरी म्हणा. Yes, sir. Okay. Now next. So instead of writing this, I will do one thing. I will change the operator. Comparison operator हमने already देखे हैं, सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम. Now tell me the answer. True. True, because actual में वो equal नहीं है, तो you'll get the output true. Okay, this is first one. Now I will change this second statement. I will write print double quote ABC greater than double quote capital ABC. Now tell me, what is output? True ना? Small. अरे small a की ASCII value is greater than capital A ना? I will write here comment. 97 greater than 65 ना? Yes, sir. Yes, so it gives you true. इसलिए मैंने बोला आपको ASCII वैल्यू याद रखो. याद रखो मतलब याद रखने में कुछ नहीं, सिंपली स्मॉल a और कैपिटल A की याद रखनी है. बाय डिफॉल्ट आपको बाकी पता चलता है. ओके, अभी इस केस में बताओ क्या होगा आंसर.
ट्रू ही होगा। क्यों ट्रू होगा? बिकॉज उसने पहले चेक की वो सेम निकली, बट वहां पे बाद में बी है, क्या स्मॉल बी, और उसके बाद क्या है कैपिटल बी, तो ऑब्वियसली सेकंड केस में क्या है यहाँ पे, हियर 98 ग्रेटर देन व्हाट 66 ना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, हाँ, तो यहाँ पे याद रखना आपको, हर एक कैरेक्टर वो चेक करता है, मतलब ऐसे नहीं कि पहले कैरेक्टर में वो वहां पे डिसीजन देता है उसका, वैसे नहीं है वो। सो जो भी हर एक कैरेक्टर वो चेक करते जाएगा। अभी यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, स्मॉल ए लिखा था और कैपिटल ए था, तो ऑब्वियसली वहां पे उसको पता चला कि स्मॉल एबीसी इज ग्रेटर देन कैपिटल एबीसी। बट सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, मैंने क्या किया, दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल रखा, तो वहां पे उसने क्या किया, सेकंड कैरेक्टर वहां पे चेक किया उसने। एम आई क्लियर? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now I will do one thing, another thing. Print bracket ABC greater than ABC. Tell me the answer. false, Yes. False. Getting? और यहां पे मैंने ऑपरेटर चेंज किया अभी। Now? true. Yes, true, because 97 is greater than equal to 97. Am I clear? Yes, sir. Okay, so all of you remember the ASCII value from capital A to capital Z, 65 to 90. And for ASCII code for small a to capital small z, 97 to 122. So I will write here ASCII capital A2 is equal to 65 to 90, and small a2 small z equal to what, 97 to 122. ठीक है, अभी ये भी बताया मैंने आपको सब। So you can try this at your home, comparing string b greater than equal to, not equal to. Okay, am I clear? Yes or no? Yes, sir. yes, Okay, I think you don't have any doubt regarding this topic of what comparing string also. Okay, so अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो कल है उसमें हम क्या करेंगे, आज के लिए बस हो गया इतना ही। इटरेटिंग द स्ट्रिंग जो ऑलरेडी हमने देखा है, बट फिर वी विल ट्राई बिकॉज दैट इज वन ऑफ द सेपरेट टॉपिक गिवन। सो इटरेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन द स्ट्रिंग मॉड्यूल जो अभी हमने देखा ना कि एस की वैल्यू वगैरह वो सारी चीजें, हर एक का मॉड्यूल हम क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज हम डिस्प्ले करेंगे सारी चीजें। तो दैट part we will see in next. So that is the last part topic of your syllabus. That is what syllabus means, unit number 4, iterating the string, and next one is what, that string module. तो string module में सारे मॉड्यूल देखेंगे हम, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, ASCII letters, ASCII lower case, upper case, digits, hexa digits, lower case, punctuations, सारी चीजें देखेंगे। Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, सो क्या क्या पढ़ा हमने आज, जो रिमेनिंग फंक्शन थे वो सारे कवर किया हमने आज के। अभी के लेक्चर हमने 3 रिमेनिंग थे, लीडिंग व्हाइट स्पेस रिमूव वाला, ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव वाला और बोथ स्पेसेस रिमूव वाला, तो वो वाला देखा, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। ओके, एंड उसके बाद एक और देखा, कौन सा, slice operation on substring to check whether that substring to display specific substring of that string। तो उसमें बहुत से वेरिएशन देखे हमने, कोलन यूज, स्टार्टिंग इंडेक्स ने दिया लाइक वाइज, स्ट्राइड वैल्यू यूज किया। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, स्ट्राइड फैक्टर हियर जहां पे नॉर्मली 1 कोलन करके हम यूज करते हैं वहां पे 1 होता है, और उसको आपको चेंज करना है, यू कैन ट्राई लाइक दिस 1 कोलन 12 कोलन 8, तो उसके हिसाब से आपके number of character will be display for that specific string। उसके बाद ORD function that we have covered, that is to convert that specific to get that ASCII value of that specific character ORD, and vice versa के लिए CHR। okay, then in operator and not in operator, that is membership operator with respect to string, that is to check whether that specific substring is present in given string or not. So for that purpose we have to use in and not in operator, that we are already done in that seen in that specific list also,
to check whether that specific member is present in that specific list or not. Same like we can use for string also. Okay. And then last topic that we have covered in today's lecture is comparing the string to check whether string is whether two strings are equal or not. So here strings are compared on the basis of what? ASCII value of character. Am I clear? Yes or no? So I think you don't have any doubt. So we will stop here, and we will I will take attendance. Roll number 1, fast. Yes, sir. C01 present. Okay, B01. ओके, आता जे ऍबसेंट आहे त्यांचे ऍबसेंटीज लावणार आहे मी फर्स्ट लेक्चरला सुद्धा. ओके, रोल नंबर 2. ओके, प्रेझेंट. रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. Present, sir. ओके सर ओके 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 ओके. रोल नंबर 4. C4. सर B01 प्रेजेंट सर. ओके ओके ओके. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5. Roll number 6. B6. Okay. 7. C7. B7. Yes. Roll number 8. Roll number 8. B8. Okay. Roll number 9. Roll number 9. 10. Okay. 11. Roll number 11. Both are absent. Both division. Roll number 12. B12 absent. Roll number 13. C13. Okay. 14. Okay. 15. Okay. 16. Roll number 16. B16 absent. 17. B17 absent. 18. B18 absent. 19. B19 absent. Okay. Present. 20. Okay. B20 absent. 21. B21 absent. 22. C22 absent. 23. Okay. 23. 24. 25. B25. Okay. 26. 26. 27. B26 present, sir. Mic 20 network issue. Okay. 27. Okay. 28. C28. Okay. 29. 30. C29 absent. Okay. Present. 30. 31. 32. 33. Okay. 34. C34. C34 absent. 35. Okay. 36. Present, sir. 37. Okay. 38. Okay. 39. 40. 40. C40. Okay. 41. 42. 43. B42. B42 absent. 43. B43 absent. 44. Okay. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. C51. C51 absent. 52. B52 absent. 53. 54. 55. 56. C55. C55 absent. 56. 57. 58. 59. C59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 67 absent.
68. 67 present. Okay, 68 absent. So I will call the number those absent. Roll number 5 from C division. 11, 22, 34, 51, 55, 68. And from C, B, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 42, 43, 52. Okay. So we will stop here. You can join for lab session. Thank you, sir. Hello, sir. Thank you.